Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 48 for that topic breathing and exchange of gases. Now we have been learning regarding the transport of oxygen and carbon dioxide gases, which is one of the very essential part in the process of respiration, because you know that oxygen is getting utilized at the tissue level in the cells, where oxygen can be used for carrying out the oxidation of the that energy rich organic food substrate like glucose. So glucose plus oxygen will react to produce CO2 and water. So what reaction is occurring in the cell, in mitochondrion particularly, that is called as the aerobic respiration, that you are well known. For that reaction, cell mitochondrion for release of energy. Suppose we are having glucose, that organic food substrate, it reacts with oxygen to produce carbon dioxide gas and water, and at that time energy is released, and that energy is stored in the 38 ATP molecules, and these ATP molecules and the energy can be utilized whenever required. I told you earlier that for every life activity energy is required, and that energy is to be utilized by the cells in the form of currency. What is that currency? ATP. And where that ATP are produced? By the aerobic respiration. For that purpose, oxygen is required to be carried. So you know that from air, that oxygen containing air when comes into the lungs, in the alveoli of the lungs, okay, then that oxygen will get transferred from air to the alveoli of the lungs, and from alveoli of the lungs it get transferred to the blood, and then from blood it is carried up to the cells, every living cells. So cell will get O2, okay, and in return to that the cells will give CO2 to the blood, okay. So blood will carry that CO2 in the reverse direction up to the alveoli of the lungs, and from alveoli of the lungs it will be given out, okay, and the CO2 containing air will be given. So try to learn, very simple. So this is the summary of that respiration and the transport of the gases, okay. अच्छी तरह से देख लो, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने बताया है दैट एवरी लिविंग सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन. खुद को ही पूछो, व्हाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड बाय द लिविंग सेल. ट्राई टू आंसर व्हाई ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड देयर फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. विच टाइप ऑफ फूड? एनर्जी रिच ऑर्गेनिक फूड लाइक ग्लूकोज, ओके. तो ले लिया, ऑक्सीजन सेल्स को जरूरी है. फिर सेल में ये जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन. This is called as the catabolism, okay, and by that process glucose will break down into carbon dioxide and water. अब यहाँ पे ये जो CO2 बनने वाला है, that is a waste gas that should be removed. That is not only waste product there, but that is harmful to the body also. समझो, ऐसा हम मान लिया कि जाने दो, रहने दो उसको, वेस्ट है तो वेस्ट. अभी हमारे स्टोर रूम में कितने भी ऐसी चीजें रहती है जो वेस्ट है एक्चुअली, लेकिन हम फेंकना नहीं चाहते, बिकॉज सम ऑफ द मेमोरीज आर अटैच विद दैट. बहुत बार मैं जाके सोचता हूँ यार इसको फेंक देंगे, लेकिन फिर घर वाले आके कहते हैं नहीं 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 इसको रहने दो, अभी उसका यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर वो ऐसा ही पड़ा है. तो ठीक है, कुछ हार्म है क्या आपको? उसके स्टोर रूम में एक साइड में पड़ा है, मैं बोलता रहने दो, ओके, जस्ट लाइक दैट. यहाँ पे CO2 अगर वेस्ट है खाली और बॉडी में इधर उधर पड़ा रहा तो चलेगा, ऐसा नहीं है. अदरवाइज दैट CO2 इज हार्मफुल, वो हार्मफुल प्रोडक्ट है, एंड दैट मे कॉज द टॉक्सिसिटी इन द बॉडी. दैट्स व्हाई इट शुड बी रिमूव. तो ये CO2 भी रिमूव करना है, ऑक्सीजन भी लाके देना है. तो ये जो पाथ मैंने बताया है रिवर्सिबल, वो अच्छी तरह से जानना. Then we have seen how the oxygen is carried in the last lecture. It is carried mostly by the RBCs, mostly by the hemoglobin in the form of oxyhemoglobin from alveoli of the lungs to the blood. Oxyhemoglobin, blood will carry
oxyhemoglobin to the cells, there it will dissociate and it will give oxygen there. अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? Particularly it is said that 20 to 25% part of CO2 gas is carried by hemoglobin. इसको हीमोग्लोबिन कैरी करता है. ओके, about 7% part of CO2 is carried in the dissolved state by plasma. प्लाज्मा में ऑक्सीजन से ज्यादा इजीली डिजॉल्व होता है. Dissolved state in plasma of the blood. Plasma contains water, you know. And about 70% of CO2 is carried out in the form of bicarbonates through the plasma. Bicarbonates soluble रहते हैं. They are soluble in plasma. Through plasma they are carried. Okay. So ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो. Very simple. बाइकार्बोनेट यानी HCO3 माइनस आयन. NaHCO3 हो सकता है, KHCO3 हो सकता है. ओके, नाउ लुक हियर दैट कार्बन डाइऑक्साइड में भी कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, पर यहां पे कंपटीशन हो जाएगा एंड दैट विल डिपेंड अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2. व्हेन पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हायर and partial pressure of O2 is lower. तो ये कंडीशन कहां पे हो सकती है? कुछ इमेजिन कर सकेंगे? That will be in the cells, in the tissues. Okay, when that are formed by the catabolic reaction. ये reaction से जब बनता है CO2, so this will be the case there. Okay, so that in cells or in the tissues that PCO2 यानी partial pressure of CO2 higher है, partial pressure of oxygen lower है. So at that time, hemoglobin will combine with carbon dioxide gas easily and will form carbaminohemoglobin. Carbaminohemoglobin. Okay? And in that form, RBCs will carry them. Okay? RBCs will carry them up to the alveoli of the lungs. Okay? फिर alveoli में जो प्रेशर का कंडीशन है वो अलग है. इन alveoli you know that partial pressure of oxygen is higher and partial pressure of CO2 is lower. So at low pressure of that CO2, this reverse reaction will take place and there this carbaminohemoglobin will dissociate to give hemoglobin and CO2 gas, and that will be thrown out with the air outside the body. समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैं बता रहा हूं हाउ आरबीसीज कैरी दैट. अब आरबीसीज में हीमोग्लोबिन टैक्सी है, इट इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. हम कह रहे पहले हमने बताया था ऑक्सीजन भी कैरी कर रहा है, फिर वहां पे कंपटीशन हो जाएंगी. कैसी कंपटीशन है? जिसका प्रेशर ज्यादा है वो ले जाएगा. ओके, हीमोग्लोबिन व्हेन CO2 इज हायर, CO2 विल कंबाइन. व्हेन प्रेशर ऑफ O2 इज हायर, O2 विल कंबाइन. तो यहाँ पे टिश्यूज में CO2 का प्रेशर हाई है और PO2 का लोअर है. Then that's why we get carbaminohemoglobin formation there in the tissues. And then in the alveoli of the lung, the things are reversed. So there we'll get hemoglobin and CO2 in the dissociated form and CO2 will be thrown. अब बाइकार्बोनेट फॉर्म होने के लिए एक एंजाइम लगता है. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase enzyme is controlling the formation and the splitting of that. Okay, this is present in higher amounts in the RBCs and in the lower amounts in the plasma, but that is very very essential. ये क्या करता है? देखो, what happens there in tissues when pressure of CO2 is more, it will combine with the water to form what? To form H2CO3. फिर H2CO3 will form what? Will form that HCO3 minus and what is that? H plus. And these are bicarbonates. तो ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? In the tissues. In tissues they are formed and now they are carried by the blood. Okay, CO2 गैस का जो प्रोपोर्शन ज्यादा है वहां पे, higher percentage of CO2 is there in tissue. It combines with water
and that is catalyzed by this enzyme. Which enzyme is there? Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase. Okay. H2CO3 will form HCO3 minus and H plus HCO3 minus is called as bicarbonate. अब जब alveoli में आते हैं, they are carried in the tissues, no doubt. From tissues they are carried by the blood up to the alveoli. तो alveoli में जब CO2 का प्रेशर कम होता है तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता है. Okay, and there H2CO3, that when PCO2 is lower, at that time H2CO3 will break down to form what? CO2 and water, and ये कहाँ पे हो जाएगा? That will be given in the alveoli. Okay, and then that will be lost outside. So try to understand this. Very simple. Okay, so near about 4 ml of CO2 will be carried by every 100 ml of the blood. 100 ml of the blood carries 4 ml of CO2 gas. ये अच्छी तरह से याद में रखो. That point is given in the NCERT book. So I hope you have understood this part of transport of oxygen and transport of CO2 gases, which is very very essential from examination point of view. तो ये अच्छी तरह से बार बार रिवाइंड करके देख लो. थियोरेटिकल पार्ट है, कंसेप्चुअल पार्ट है, बट सिंपल पार्ट, एंड यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड. आई एम कॉन्फिडेंट अगर कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ोगे तो. सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो to your friend circle. We shall meet again in the next lecture. Till then, take care. Thanks a lot.